हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन क्रिप्टो डंकर। तो आज की वीडियो में हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे एज यूजुअल एंड देखेंगे कि चार्ट्स पे भी क्या दिख रहा है एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल नेक्स्ट मूव्स फॉर बिटकॉइन. And we'll also talk about the trade setups that we discussed in the last video with respect to the altcoins like Ethereum, Solana, Cardano, COT. Before moving forward, let's have a disclaimer first. It's not a financial advice, it's just my analysis and opinion. अपनी खुद की research जरूर करें before investing any money. Let's directly get into the charts. So yesterday it was a red day. We have seen two dumps and on a shorter time frame हम कह सकते हैं कि थोड़ा bearish माहौल चल रहा है. We're making lower lows and lower highs. So kind of 1 hour time frame में we are kind of in a downtrend, but on the longer time frame it's looking nice. It's just a healthy correction, but what is more important is what is the reason behind this dump. So the reason behind this dump was the panic that is going on around the world with respect to the tension between Ukraine and Russia, because of which so US citizens have been called back to their own country from Ukraine by Biden, and this kind of created a lot of trouble out there. But despite that, if we look at the daily chart, so we haven't seen much panic in the charts. It's like kind of a 2 to 3% dump, which is quite usual in crypto market. But yeah, like it could be worse in case it really happens. Like if Russia attacks Ukraine, it's gonna be like global markets would be affected. We'll see crashing markets. So what I would suggest is keep some cash to yourself, some fiat to yourself in order to buy the things in dip, because we've seen how the crypto market recovers. Okay, moving on to the charts. So if we see with respect to the descending triangle, so we've technically broken out of it. Okay. We did see a bounce from over this zone, but we ended up consolidating here. The next zone to keep an eye on would be this zone, because we did have quite good support formation over here. Bitcoin did not even move, मतलब यहीं पे consolidate कर रहा था. So this zone is going to be a good zone to keep an eye on in case we don't start moving upwards, which we are seeing that it's kind of just roaming around here. So ये zone, उसके बाद अगर हम अपने descending triangle के target के बारे में बात करें तो वो ये वाला zone है 40,000. ठीक है, 40,000 to we could see a wick. In case we break this zone also, we could see a wick till 39,000 too. ठीक है, तो ये इस बारे में just be a little, क्या नाम है, कीप दिस इन माइंड. ठीक है, एंड कंसिडरिंग जो भी चल रहा है ग्लोबली, सो वी वुड हैव टू कंसिडर ऑफ दैट आल्सो. बट दैट डज नॉट मीन कि हम एकदम ही बेरिश हो जाएं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से ऊपर की ओर मूव करें. ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ good perspective over the shorter time frame and to track Bitcoin to see how and where we are going. I just made this. This is a descending wedge. Okay, just like a wedge that we saw here before we broke out. Okay, so this is also a descending wedge exactly, but I'm not saying this time also we'll like break out. We'll see what happens, maybe not. So this is also a descending wedge in which Bitcoin is kind of moving right now. You might see some rejection over here from 42,500 or 600, and then we'll try to move downwards till 41,400 or even 41,200, and then some resistance over here till 41,700, 800, and then maybe break down or break upwards. Okay, so that we have to see. So in case we take a conservative target of the max widening, so and if we consider that we are breaking down from, let's say, here, so we are going to that zone only, 40,000 or 39,000. Okay, and in case we are breaking down from here, this support zone that we have 40,300, then we are at least going till 39,000. And in case we break out, let's say if we go this way downwards and then we try to break out of it, so the target would be somewhere around 44,200. Okay, I'll share this chart over Telegram channel. And if you have not joined the Telegram channel, do join the Telegram channel. The link is in the description. Let's see what we talked yesterday. So this was the double bottom that we mentioned yesterday, and this was the neckline. We saw bounces from the neckline and then we dumped, and the target was 41,100. So we are kind of executing it. These two trend lines are the exact trend lines that we were tracing Bitcoin in the previous downtrend, when in the previous downtrend that we had till 33,800. So ये extend कर दी है मैंने. So right now we just saw a retest of this trend line itself,
And let's move to daily. What's happening in daily? This zone is the 50 daily MA and EMA zone. So let's bring the moving averages down. So what we see is that ये zone जो है इस टाइम पे बनाया गया था, तब हमारा moving average जो था वो यहाँ था और ये वाला यहाँ था. अभी like it has gone down, so we'll just increase the width of the zone. So अब ये zone जो है वो 42,800 से 42,200 तक का हो चुका है, and that's where we are residing right now. So that also coincides with the zone that we have here. So ठीक है. So this is something that we have to look forward to, whether we find support over there or not, or we dump down in order to retest the 20 daily moving average, which is here. So इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है. Blue channel is something that is not confirmed yet, because obviously we need around 3 or more than 3 touches in order to confirm a particular channel. Let's see if this channel gets formed like this only, or we end up changing it. So in case if we look at that too, we might see, as we discussed in yesterday's video, we might see something like this, or we might see something like this. So in both the cases, 40,000 is a viable zone where we could actually see Bitcoin. If we look at Ethereum, we did found a bounce from this trend line, and because BTC dumped, so we saw a dump there, and we exactly came to this zone. We are trying to hold above it. I told you yesterday also, if you are able to find Ethereum around 2800 to 2800, do grab it. We did go to 2880, so this was a good zone. If you अगर आपने यहाँ पे order लगाया होगा तो execute हुआ होगा, but I would still say, because the market is quite unstable, so अपने stop losses trail करते रहो, छोटे छोटे profits book करते रहो, ठीक है. If you are buying in spot तो होल्ड कर सकते हो. थोड़ा यहाँ बाय कर लिया है आपने, थोड़ा इन केस यू फाइंड it around this zone 2800 से 2750 के अराउंड में, do buy it, ठीक है. So DCA करो, that is the best option. Moving to Solana, we did see some bounce from this trend line, this channel, but as market dumped, so we dumped to this zone. The target for the breakdown out of this channel is somewhere around 85 or 86, which also is the retest of this trend line over here. So this could be a good zone in order to enter. So Solana के पर्सपेक्टिव में अगर आप 97 के अराउंड कोई ऑर्डर लगाया था, एग्जीक्यूट हुआ है, तो DCA करो, कुछ 97 में बाय कर लो, कुछ समवेयर अराउंड 90 एंड समवेयर अराउंड 84, ठीक है. इस जोन में अगर Solana मिले तो जरूर बाय करना. दिस वुड बी अ गोल्डन जोन. मूविंग टू COTI में भी जो असेंडिंग ट्रायंगल था, ये ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की ओर, एंड आई टोल्ड यू गाइस कि अगर ब्रेक डाउन होता है तो दे वुड बी जोन्स जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेंगे थोड़े बहुत. तो पहला जोन था ये वाला, और ऐसा नहीं है कि ये जोन्स मैंने अभी बनाए हैं. अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट है तो आपको पता होगा, ये चार्ट्स में पहले भी शेयर कर चुका हूँ. जब हम यहाँ ब्रेकआउट के जोन के करीब थे, तो ये जोन्स जहाँ पे हमने ये बाउंसेस पाए हैं, ये वही जोन्स हैं एज यू कैन सी. तो ये चार्ट्स भी हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम के अंदर. तो ये जोन है जहाँ से हमने एग्जैक्ट बाउंस मिला है. अगला जोन, इन केस यू ब्रेक दिस, सो वुड बी अराउंड 0.25. द टारगेट फॉर दिस असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक डाउन वाज 0.20, एंड इन केस आपने ये ब्रेक डाउन का ट्रेड लिया है तो यू वुड बी अराउंड 8% इन प्रॉफिट. सो मैनेज योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली. मूविंग टू ADA, कल ADA में बताया था कि डबल बॉटम फॉर्मेशन है. इन केस हम इस नेकलाइन को ब्रेक करते हैं तो वी वुड फॉल डाउन. वही हुआ, हम फॉल डाउन किए. हम अभी यहाँ 1.06 टच कर चुके हैं, ठीक है, एंड द टारगेट इज डाउन हियर अराउंड 1.043. कल भी मैंने आपको बोला था कि या तो ट्रेड ADA में एंट्री तब लो जब ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म कर ले, या फिर जब ये ब्रेक डाउन कर जाए. एंड नाउ इट्स द टाइम टू टेक द एंट्री, ठीक है. सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स. ADA काफ़ी नीचे मिल रहा है, ठीक है. ये वही जोन है जहाँ पर कि हम जब डंप किए थे तो डाउन ट्रेंड में मिले थे. ऐसे भी मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा तो यू वुड सी पंप्स लाइक दिस, 20-25-50% पंप्स मिलेगी. ट्राई टू DCA 10 to 20% यहाँ ले लो, अगला 20% यहाँ ले लेना, एंड ट्राई टू DCA इट ऑल अराउंड, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आप किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में TA एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं. प्लीज ट्राई टू अवॉइड मीम कॉइन्स. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना. डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स. आई वुड ट्राई टू अपडेट यू गाइस रेगुलरली. जॉइन द टेलीग्राम चैनल for quick updates. Link is in the description. Till then, stay safe, stay healthy, and keep trading.